in real life we know what means continuity, right? मैं continuously 5 hours तक पढ़ती रही, right? This is example of continuity. और जो मूवी हम देखने जाते हैं बिफोर इंटरवल, राइट, मूवी जो चलती है वो 1.5 आवर की, वो क्या होती है, कंटिन्यूटी में चलती है. देन इंटरवल इज अ ब्रेक. इंटरवल के बाद जो मूवी होती है वो भी कंटिन्यूटी में चलती है. कंटिन्यूटी मीन्स किसी काम का लगातार होना, बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रही है, राइट? इन रियल लाइफ तो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो कंटिन्यूटी में, जैसे हम वॉक करते हैं कंटिन्यूटी में करते हैं, राइट? हमने 5 मिनट कंटिन्यूसली वॉक की, 10 मिनट्स कंटिन्यूसली वॉक की. यू कैन ऑल्सो गिव मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? बट हाउ वी check continuity when mathematics is concerned, right? So we are talking of continuity in mathematics now. Whenever we will be talking of continuity, we will be talking continuity of different functions, right? Functions, we know what is the function. So we will be given different functions about which we have to check whether the given function is continued at a particular point or not, right? Now, for example, I am given a function f of x is equals to 1 if x is less than or equal to 0, and 2 if x is greater than 0. I have to check whether the function is continuous or not, right? अगर हम ग्राफिकल पॉइंट से देखें तो हमारा फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होगा अगर उसके ग्राफ में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है. जैसे हमने ये एक ग्राफ किया था तो ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है. पैराबोला किया था, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कोई ब्रेक नहीं है, राइट? तो अब हम एक ये ग्राफ करेंगे जो हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हम प्लॉट करेंगे. अगर हमारा x इक्वल्स टू 0 है, राइट, x इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से x इक्वल्स टू 0 के लिए f ऑफ x क्या है, 1. अगर हमारा x लेस देन 0 है तो f ऑफ x क्या है, 1. वो हमने यहां से वैल्यू ली. और अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x क्या है, 2. दिस इज गिवन टू अस. वी हैव टू चेक whether the given function is continuous or not. तो हम पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. अगर x की वैल्यू 0 है, when x is 0, तो f of x means y की वैल्यू कितनी है, 1. तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1. दिस इज पॉइंट 0,1, राइट? अब दूसरा, जब x लेस देन 0 है, मतलब 0 नहीं है पर 0 से छोटा है, तो भी y की वैल्यू क्या है, 1. तो 0 से छोटा, ये सारी नेगेटिव लाइन आ जाएगी, ठीक है? ये सारा नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लेस देन 0 हैं, तो y की वैल्यू इस हर पॉइंट पे हमेशा क्या है, 1. सो ये लाइन होगी x लेस देन 0 के लिए, राइट? अब हमने प्लॉट किया, जब x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 2. x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो हमने x 0 इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके लिए यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया. ये सर्कल का मतलब है 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट्स. तो x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू हमेशा क्या है, 2. y की वैल्यू इस पॉइंट, इस लाइन पे 2 है. तो y इज इक्वल्स टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 0, पर यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने एम्प्टी सर्कल बना दिया. एम्प्टी सर्कल मींस x इक्वल्स टू 0 नॉट इंक्लूडेड, राइट? दिस वी आर नॉट इंक्लूडिंग. नॉट इंक्लूडेड, राइट? अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, राइट? वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वी विल चेक इट थ्रू द ग्राफ. सो वी विल चेक, हम आवर ग्राफ शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, सो वी विल बी गोइंग, यहां से हम यहां तक गए, उसके बाद
आगे की लाइन कहाँ है, ब्रेक हो गया, यहाँ पे आगे लाइन नहीं है, वी विल जंप टू दिस पॉइंट और फिर ये वाली लाइन, राइट। तो अगर हमारी लाइन कंटिन्यूस है, मींस हम कंटिन्यूसली उसमें मूव करते जाएंगे, हमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अगर हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। बट यहाँ पे हमें पेन उठाना पड़ गया, दो लाइंस थी हमारी, राइट, एक ये वाली थी और यहाँ पे आके ब्रेक आ गई, इसके बाद हमें पेन को उठा के इस पॉइंट पे रखना पड़ा, राइट। तो जहां पे हमें पेन उठाना पड़ गया, एक ब्रेक आ गई, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। मैथमेटिकली हम इसके फॉर्मूले भी बनाएंगे, राइट। ये तो हम एक ग्राफ से कर रहे हैं कि ग्राफिकली हम क्या कह रहे हैं। मैथमेटिकली देन वी विल ड्राइव अ फॉर्मूला दैट हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ तक तो लाइन कंटिन्यूसली स्ट्रेट जा रही थी, बट इसके बाद पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। यहाँ इस पॉइंट के बाद हमें आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, ये एक गैप है, राइट। इसके बाद हम जंप करते हैं इस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, और उसके बाद हम हमारे पास सारी लाइन आ जाती है x लेस देन 0 y इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो है जिस पॉइंट पे हमारी लाइन आके डिसकंटिन्यूस हो गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो इस फंक्शन में आपको क्या लगता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है? x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस है, ये लाइन एंडलेस चलती जाएगी, जीरो। यस, x लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस है, ये लाइन चलती जाएगी हमारी इन्फिनिटी तक। बट जब हम x इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, तो 0 पे आके हमारे फंक्शन को ब्रेक लग जाती है, राइट। So our function is discontinuous at x equals to 0. So for this, the x is equals to 0 is point of discontinuity, right? Right now we are doing it from graph, but later on we will be doing it through formulas also, right? This is what continuity is. So let us see one more example. Now the function is given by f of x is equals to 1 if x is not equal to 0, and 2 if x equals to 0. Now less than x less than 0, x greater than 0 is not given. It is only given x is not equals to 0. x 0 नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे लेस देन 0 चाहे ग्रेटर देन 0, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। But x should not be equal to 0. When x equals to 0, x equals to 0, f of x means y is equals to 2. When x is not equal to 0, whether positive whether negative, y will be taking the value 1. Now we have to check whether the function is continuous or not, right? So we are plotting the graph. When x is 0, the value of y is 2. When x is 0, y is 2 means this point. This is the point x equals to 0, y is equals to 2. Now, when x is not equal to 0, y is equals to 1. That means for all positive values of x, for all positive values of x, the value of y is 1. But don't use annotations, please. For all positive values of x, the value of y is 1. And for all negative values of x, the value of y is again 1. But for the value x equals to 0, the value of y is 2. So अब हम चेक करेंगे क्या हम इस पूरी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए, राइट। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे तो हम पहुंचे, बट x इक्वल्स टू 0 पे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। x इक्वल्स टू 0 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर से फिर से नीचे आना पड़ेगा, राइट। यानी कि बीच में एक कैविटी आ गई, एक होल आ गया, एक गैप आ गया, राइट। सो दिस फंक्शन इज नॉट continuous, it is discontinuous, and the point of discontinuity is x is equals to 0, right? This function is discontinuous at x equals to 0. अब यही अगर फंक्शन दिया होता
f of x is equals to 1 if x is not equals to 0, and 1 again if x equals to 0, right? फिर क्या होना था, जो ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे ऊपर नहीं होना था, ये जो सर्कल है ना यहीं पे हमारा पॉइंट होना था। तो ये ब्लू वाला सर्कल जो है हमारा, ये यहाँ पे डार्क हो जाता, तो ये फंक्शन क्या हो जाना था, हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाना था, ये लाइन हमारी ब्रेक नहीं होनी थी, राइट? तो हम कह सकते थे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। बट क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट 2 पे चला गया, बाकी सारी लाइन हमारी y इक्वल्स टू 1 पे है, बट एक पॉइंट जो यहाँ इसको कनेक्ट करना था जिसने y एक्सिस पे, ये तो 2 पे चला गया, तो हमारी लाइन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, राइट? So this function is not continuous. So we are saying that a function is continuous at a point x equals to c if the function is defined at x equals to c. The very first function should be defined. Defined means when substituting the value x equals to c, the function should not having the value infinity, right? Suppose my function fx is equals to 1 upon x. This function is defined at all points except x equals to 0, right? So what I'm saying, a function is continuous at x equals to c if the function is defined, right? The function should be defined at x equals to c, and if the value of the function at x equals to c equals the limit of the function at x equals to c. Okay, this we will discuss what we are saying. If f is not continuous at c, we say that f is discontinuous at c, and c is the point of discontinuity of the f, right? Like now what we are saying, if the values of the function at x equals to c equals value of the function equals the limit of the function, okay, this we will be doing in the questions ahead, then I will explain the definition again, what we are saying. Now the question is, discuss the continuity of the function f given by f of x is equals to x modulus at x equals to 0. The question is, discuss the continuity of the function f of x is equals to x modulus at x equals to 0. We have to check whether the function is continuous at x equals to 0 or not. So first we will make its function. F of x will be minus x if x is less than 0, plus x if x is greater than 0, and again if it is equals to 0 we will be taking it as x, right? So this is by the definition of a modulus function. Now at 0, f of 0 will be 0 modulus will be 0 at value 0, right? So clearly the function is defined at 0 and f of 0 is equals to 0. Defined means when we are putting 0 in the function, it is not becoming infinite, right? Or not defined. The function is defined. Clearly the function is defined at 0 and f of 0 is equals to 0. Now we are talking of left hand limit, and okay, we will be talking of two limits. Say it is 0. If we are taking numbers on the left side of a number line, that means left hand limit, and if we are taking numbers on the right hand side of number line, right of 0, then we will be taking right hand limit. Okay, right hand limit. So left hand limit we will represent with 0 negative, right? And right hand limit we will be represent with 0 negative. Actually it will be whatever the limit we have given. X equals to 0 is given, is that is why I am taking 0 negative 0 positive. If x equals to 2 will be given, I will be taking 2 negative 2 positive. X equals to 3 will be given, 3 negative 3 positive accordingly, right? Now, first we are calculating left hand limit of f at 0. Limit extends to 0 negative.
x tend to 0 negative means the numbers which are near to 0 on the left side of number line, very near to 0, right? Approaching to 0, x is approaching to 0, that means x will be very near to 0, but on the left side of number line. So 0 negative is indicating on the left of number line. So limit x tend to 0 negative means x is less than 0. Just wait. Okay. So x limit x is tending to 0 negative means x is less than 0. X is less than 0, then f of x will be minus x. It is given to us in the function that for x less than 0, the value of a function is minus x. Now, we will put the value x equals to 0. Approaching to 0 means the value will be near to 0. So, put the value 0. So, it will be minus of 0, one step minus of 0, which means 0, right? So we will put solve the limit means put the value of the limit. So 0 we will put here. It will be minus 0. Minus 0 will be equals to 0. Now we will calculate the right hand limit. Similarly, the right hand limit of f at 0 is limit x tend to 0 positive f of x is equals to limit x tend to 0 positive. 0 positive means now towards the right side. 0 positive x. If x is greater than 0, the value of function is x. Put x equals to 0, we are getting 0. Now by the definition of limit, if limit x tends to 0 negative, f of x is equals to limit x tends to 0 positive f of x is equals to f of 0, right? अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और ये दोनों लिमिट्स हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए उस पॉइंट पे, then we will say that the function is continuous at x equals to 0. The left hand limit, right hand limit and the value of the function coincide at x equals to 0. The function will be continuous at x equals to 0. जैसे कि हमने इस ग्राफ में किया था, राइट? इस ग्राफ में क्या था, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ये हैं x is tending to 0 पॉजिटिव, और ये जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं ये कौन से हैं, x is tending to 0 नेगेटिव. हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है जो 0 के बहुत क्लोज है टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, और यहाँ पे वैल्यू है जो 0 के बहुत क्लोज है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ये दोनों इक्वल हों और प्लस जो फंक्शन की वैल्यू है ये जो सर्कल है ये भी इनके इक्वल हो जाता. अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती और जो ये सर्कल वैल्यू वैल्यू है दैट मींस f ऑफ 0 ये हमारा 1 हो जाता, राइट? अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता तो हमारा फंक्शन क्या होना था, कंटिन्यूस होना था. So mathematically we are saying, mathematically the formula for continuity is if the left hand limit, that means the points near to 0 or the point near to the given point of continuity, right? The left hand limit is equals to right hand limit, दोनों limits equal हो जाए, and it is not that the both the limits are equal then the function is continuous, no, but the value of the function at that point also should be equal. अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी then we will say that the function is continuous, otherwise the function is not continuous, right? The left hand limit and the right hand limit and the value of the point, जो यहाँ पे ऊपर point है वो यहाँ पे होना चाहिए था, so that ये तीनों values जो हैं वो equal हो जाती, then we will say that the function is continuous. So from this graph only we have derived the formula that for the continuity left hand limit should be equal to right hand limit and it should be equal to the value of the function.
then we will say that the function is continuous. Right, this we have talked in the definition. A function is continuous at a point x equals to c if the function is defined at x equals to c, and if the value of the function, right, this f of 0 is equals to 1 is the value of the function, and if the value of the function at x equals to c equals the limit of the function, right, limit means left hand limit and right hand limit. If it is not continuous, then we will say the function is discontinuous. If value of the function is equal to the limit of the function, then we will say the function is continuous, right? So next we will be taking another example. Again, in this example, less than 0, greater than 0 is not given, is not equal to 0 given. Show that the function f given by f of x is equals to x cube plus 3 if x is not equal to 0, and 1 if x is equals to 0 is not continuous at x equals to 0. That means when I will put x equals to 0, f of 0 is given to you, it is 1. F at x equals to 0, that means f of 0 is given to 1, right? F of 0 is given equals to 1, and when x is approaching to 0, x is not 0 but approaching to 0, when now we are not taking positive and negative, right? Positive and negative we are taking when we are given x is less than 0 and greater than 0, okay? But here we are given not equal to 0, so it is sufficient to take one limit only, right? X limit x is approaching to 0 means we are including both positive and negative in this limit. The function is defined at x equals to 0, and its value at x equals to 0 is 1. This we already said, the function, the value of the function f of 0 is 1 because it is given to us in the question. The function is defined at x equals to 0 and its value at x equals to 0 is 1. But when x is not equal to 0, the function is given by a polynomial. That means when x is not 0, but it is approaching to 0, limit x is approaching to 0 f of x. Same, that means number line the points very near to 0. These are the points which are very near to 0. So we write it x is approaching to 0. So limit x is approaching to 0, f of x will be limit x is approaching to 0, f of x is x cube plus 3, right? So we are writing x cube plus 3. Now put the limit x cube means 0 cube. 0 cube plus 3, which is equals to 3, right? Since the limit of f at x equals to 0 does not coincide with f, okay. Now you will write one step, limit x tends to 0, f of x is not equal to f of 0, because limit x tend to 0, f of x is 3 and f of 0 is 1. 3 is not equal to 1. Therefore, limit x tend to 0, f of x is not equal to f of 0. Since the limit of f at x equals to 0 does not coincide with f of 0, the function is not continuous at x equals to 0. It may be noted that therefore x equals to 0 is the point of discontinuity for this function. Sometimes question is asked, find the point of discontinuity. So we will tell at which point the function will be discontinuous. So the function is discontinuous at x equals to 0 because we have calculated two values. One is limit of the function and second is value of the function, right? Value means we are directly putting x equals to 0. F of 0 is equals to 1. But when x is not equal to 0 but it is approaching to 0, we are taking limit x is approaching to 0, f of x, which is given to us x cube plus 3, limit extending to 0, x cube plus 3, which is 3. Now limit extending to 0, f of x is not equal to f of 0. That means limit of the function is not equal to value of the function. If limit is of the function is not equal to value of the function is not continuous, and it is discontinuous at point x equals to 0. Therefore x equals to 0 is the point of discontinuity of the
function. Okay, then we have another example. Check the point where the constant function f of x equals to k is continuous. Okay, so we have done the continuous function also. We have made the graph. The graph of continuous function is a straight line parallel to x axis. अगर हम वैल्यू जो है y की 1 ले रहे हैं, राइट, द f of x is equals to k, k की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, राइट. ऑल दी x can take any value but y will take always 1, so f of x is 1 is this graph. अगर x, that means यहाँ पे this line is always continuous, right. अगर हम x की वैल्यू कुछ भी ले और हमारा f of x 2 होगा, right, तो 2 पे हमारे सारे पॉइंट्स ये ग्राफ हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. सिमिलरली भी हमें ये बताना है कि कांस्टेंट फंक्शन f of x k है, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, राइट. वी हैव टू टेल इट मैथमेटिकली. नाउ first we have to check whether the function is defined or not. Now no, there is no value for the for which the function will be going to infinity, therefore the function is defined at all real numbers, and by definition its value at any real number equals k. The function is defined at all real numbers, and put any real value of x equals to 0.1, f of 0.1 is equals to k, f of 2 is equals to k, f of 2.3 is equals to k. Put any real value, right, its value at any real number equals k. Now we are taking, let c be the any real number, then limit x is approaching to c. We are calculating limit of the function f of x is equals to limit x approaching to c. f of x की value क्या है, k is returning to us k. अदरवाइज एफ ऑफ सी अगर एक्चुअली कैलकुलेट करें तो वो भी क्या है, के. लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, के. दैट मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन. Since f of c is equals to k is equals to limit x approaching to c f of x for any real number c, the function is continuous at every real number, right. Therefore the function will be continuous. ग्राफ्स वी नो, ठीक है, हमें इनके ग्राफ इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि हमें ग्राफ से ही पता होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट हमें मैथमेटिकली शो करना है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज continuous. The next example is prove that the identity function. Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, I suppose you have by mistake admitted someone from +1 or 10th. Don't and just read the one. okay. How they got the link, I don't know. मैम आपने +1 के ग्रुप में भेजा था मैसेज. Okay. By mistake I sent. Now, beta, your class will be start after 5 minutes. Okay, so you can sign off now. You can leave the class. Okay, so we will do up to this only, right? Rest next examples we will be doing tomorrow. So, but you come after revision only, right? Revise the continuity and differentiability and try to do some examples also so that it will be clear to you. It is not difficult, only you have to keep in mind that you have to find the value of the function, the left limit, the right limit. And if a left limit, right limit is not given, you have to find the limit of the function. So continuity chapter is easy. In every question you will be doing the same thing. Value of the function, limit of the function, if it is equal then continuous, otherwise not continuous, right? So next we will be doing tomorrow. Okay, I'll sign off the class. Any doubt? Ma'am. Okay. Welcome. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye.